जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हैं आप? हम नए हैं मुंबई से। योगेश भैया, मैं इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में कमेंट कीजिएगा। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ भैया। आप कहाँ से हो? मुंबई। ओके, थैंक यू भैया। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। कभी आए हो मुंबई? बचपना वहीं बीता है भैया। बोलो।
बचपना वहीं बीता है। आराम से पैर सीधे करके बेटा सो। पैर सीधे करो। कंबल ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर दो। हाँ। नहीं नहीं, मुझे ठंड लग रही है, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम बाबा साहब है, प्यार से सोनू बोलते हैं। लेकिन इसमें बाबा साहब तो नहीं लिखा भैया, आपका नाम इंग्लिश में बाबा दिल पे लिखा है। आप सोनू बोल सकते हो। बिल्कुल भैया। थैंक यू सो मच भैया बताने के लिए, थैंक यू। पंखा बंद कर दो बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अलिंदर भैया जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुद्धाय, जय बीएसपी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? घर परिवार सब ठीक है? खाना पीना हो गया? हाँ भैया, अभी जस्ट खाना हुआ है। आप बताइए भैया, आप कैसे हैं? आपका खाना पीना हुआ? कौन है तुम? सोनू भैया। थैंक यू भैया, सोनू भैया, थैंक यू सो मच। मुंबई कब आओगी? कोई काम है क्या भैया? जय भीम नमो बुद्धाय, जय बीएसपी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? घर परिवार सब ठीक ठाक? खाना पीना हो गया? हो गया भैया। 2 नंबर लाइक कर दिया है। जय भीम नमो बुद्धाय, जय बीएसपी, कैसे हो आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? अलिंदर भैया, सोनू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। जय भीम नमो बुद्धाय मेरी तरफ से भी आप सभी ग्रुप एडिटर को, बहन भाइयों को थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू। दादर 6 दिसंबर को। मैं यही हूँ, पहले नाम बता। सोनू भैया बोल रहे हैं, सोनू भैया से हमारे बात कर लीजिए, वो मुंबई में ही है भैया। आप जहाँ बुलाएंगे वो चले जाएंगे। बिल्कुल मैं सही हूँ, बढ़िया हूँ। त्याग और वरदान दोनों चीज मेरी है। जय भीम नमो बुद्धाय, जय बीएसपी। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच बड़े भैया, थैंक यू। आप आते हैं तो बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू बड़े भैया जी। खाना पीना आपका हुआ भैया? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? किसी का यूज करने से क्या मिलता है? पता नहीं क्या मिलता है भाई, इन लोग बोल के चले जाते हैं अपने घर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है 6 दिसंबर को। अच्छा भैया। नाम? नाम भैया बताए हैं अभी, क्या बताए हैं नाम? सोनू। सेम आप ही का नाम तो बताए हैं भैया, हमको पता है। मैं जाऊं? बाप का नाम सोनू है। सो जाओ, अभी भाई आ जाएगा ना, फिर मैं तब सो जाएंगे सब लोग। पगले, यह याद रखना, सिस्टर को समाज बेकार होता है जिसका
उजाला न हो और वह भी भगवान बेकार होता जिसका लबों पर नारा हो। जय भीम नमो बुद्धाय बीएचपी। थैंक यू सो मच बड़े भैया, थैंक यू थैंक यू। आप सब जैसे भाइयों से तो हम सब बहनें सेफ हैं। बाकी तो लोग आते हैं ना एंट्री करने, पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, जैसे इनके घर में बहन बेटियां हैं ही नहीं, इज्जत ही नहीं करते हैं किसी की। पता नहीं कैसे इनके संस्कार होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और नोएडा में बहन मायावती का बहुत बड़ा रैली होने जा रहा है। लखनऊ से भी बड़ा वाले होने जा रहा है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अच्छा भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। कुत्तों की तादाद से शेर मरा नहीं करते और बाबा साहब के दीवाने किसी बाप से डरा नहीं करते। जय भीम जय भीम। नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। इन लोगों की आदत होती है भैया, अपने आदत से बाज आए हैं। चार गाली सुन लेते हैं, फिर शांति मिल जाती है, अपने आप चले जाते हैं। मैं वहीं मिलूंगा। पंखा चालू कर लो अब। श्रेय अपने पास जाओ। श्रेय, जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल भैया होता है, लेकिन क्या है ना, बहुत करते हैं हम लोग, ब्लॉक कर देते हैं, वो लोग दूसरी आरटी से फिर आ जाते हैं, समझे। इसलिए हम लोग उनके मुंह नहीं लगते हैं। बुराई करने से पहले सोच लो, मैं हर टाइम यही मिलूंगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।
अपने घर चले गए। अपने घर चले गए भैया। ठीक है सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धा, जय बीएसपी, धर्मरात्रि। आप सभी ग्रुप एडिटर को मेरी तरफ से थैंक यू बड़े भैया जी। शुभ रात्रि आपको भी, थैंक यू भैया। अलिंदर भैया जय भीम, नमो बुद्धा, सोनू भैया जी की तरफ से भैया। आकाश आ गया बेटा? अच्छा 1 मिनट, खोल देना छोटी दरवाजा। क्या हुआ पैर में? थारा थक गया हूँ। क्या लिखा भैया? जेला भाई बवारिया। आप एक बार अपना नाम लिख दीजिए। स्वागत है आपका। बोलिए भैया कैसे हैं आप? मैं इसीलिए लाइव चालू करेंगी कि तुमको 2 बज जाएगा। मैं सोचा कि मुझे जगना ही है, तब लाइव चालू कर लेती हूँ। कपड़े अच्छे से उतार के साइड रखो और सो जाओ, ठीक ना? कल तो वैसे भी ऑफ है स्कूल का, हॉलीडे है ना।
हाँ भैया, मेरा खाना पीना हो गया। आप बताइए, आपका हुआ? आप कहाँ हो? खाना पीना मेरा हो गया भैया। आप बताओ, आपका हुआ? अभिषेक नहीं। अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों खाना नहीं हुआ आपका? बना रहा था। क्या बना रहे हो अभी? दिमाग काम नहीं करता क्या बेटा? मैं कह रही हूँ फोन किसी तरीके से कर रखे हो। अच्छा नहीं लग रहा, बाल कट गया है। अच्छा लग रहा भाई। आप बाल को रखते थे ना, इसलिए आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है बाल।
सॉरी, मुझे नहीं खाना है, मरना पसंद करेंगे पर खाना नहीं। आकाश मैं मार दूँगी बेटा, परेशान करोगे मुझे तो। मैंने आपको पागल ऐसा हर चीज़ पर अड़े रहना, मर जाएँगे लेकिन झुकेंगे। हर चीज़ नहीं होता भैया, कोई कुछ बोल देता है हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, यही हमारे अंदर कमी है। बाबा साहब की एक बात याद रखना, 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की ज़िंदगी जिया जाए, चाहे वह दिन आखिरी क्यों ना हो। बिल्कुल राइट।
क्योंकि यही सोचकर मैं अभी ज़िंदा हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह आपकी कमज़ोरी है, यह आपकी कमज़ोरी है। अच्छा भैया, मेरी कमज़ोरी है, ये तो मुझे भी पता है।
सही बोल रहा हूँ। अच्छा भैया, मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ, दोनों तरफ देख रही हूँ। श्रेया दवाई नहीं खाया ना बेटा? आए श्रेया। सही नहीं है क्या भैया? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कह रहे हैं। पहले खाना खा लो।
नींद नहीं आ रही है ना? दिन में सो गई थी ना इसलिए। हाँ बेटा, सही ना? अलाउड काम, मच्छर बहुत लग रहे हैं। क्या हुआ छोटे? सो जाओ। श्रेया सो रही है। हम्म। खाना खा लो। अपनी वाली तकिया दे दो। अपनी वाली तकिया दे दो? क्यों? बस। ये मैं ले लूं? अच्छा। खा रहा हूँ। हाँ, खाना खा लो। और सामने खाना भी ना, नहीं तो हमें लाइफ से भागना भी पड़ जाएगा। सिर्फ नाम से। हाँ, नाम से। डर के आगे जीत है। कभी भी जीत नहीं हो सकती उसके लिए। उस चीज के लिए कभी जीत नहीं हो सकती भैया जीवन में। सांस रुक जाए तब भी कोई फिक्र नहीं है। पर इस चीज के लिए जीतना नहीं है। हो सकती कोशिश तो करो, कभी जीवन में नहीं, कोशिश करना ही नहीं है हमें, सच्ची। कोशिश कभी नहीं करना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बात तो राइट है। पर जिस चीज की कोशिश कहो उस चीज का करे, बट इसका कोशिश तो कभी करने की नहीं सोचे हैं। क्योंकि हमें इससे और एलर्जी होती है।
मेरी बीवी भी शाकाहारी थी, अब वो खाने लगी है। मैं बचपन से नहीं खाई हूँ, आज तक नहीं खाई हूँ। मेरी तबीयत खराब हो जाती है देख कर। खाने के बाद पता नहीं क्या होगा। वह भी बचपन से नहीं खाई थी, पर उनको खा लेती है ना, उनको हजम होता है, खा सकते हैं। हमें तो बिल्कुल देख कर घृणा होती है, खाने की तो बात छोड़ दो। जिस चीज से नफरत, तो नफरत ही है। हाँ, अब नींद आ रही है। बातें करते करते कब सो जाए कुछ पता नहीं है हमारा। पहले वह भी ऐसा ही करती थी। नहीं भैया, सच्ची बता रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं ना, हमारी फ्रेंड भी बहुत ऐसी थी जो नहीं खाती थी, अब खाती हैं। वो भी मुझे कहती थी कि तुम अभी ऐसे बोलती हो ना, फिर खाने लग जाओगी। लेकिन आज तक मैंने कभी भी, मेरी इच्छा ही नहीं हुई कभी। मैं तो नहीं बना सकती, चाहे मार बेशक खा जाऊं। बनाते बनाते खाने लग गई, पर नहीं बना सकती मैं। ना बनाती हूँ ना खाती हूँ, न बर्तन धोती हूँ। जो खाए वो बनाए, बर्तन धोए, वो भी अलग, मेरे किचन में नहीं। अब नींद आ रही है मुझे सच्ची। सच्ची आंखों की देखो सूझ रही है। मैं भी नहीं खाता था पहले, अंधभक्त था पूरा। इसमें अंधभक्त की कोई भावना नहीं है भैया, सच्ची। पर मुझे बचपन से ये नहीं है कि कोई मतलब अंधभक्त या ऐसा कुछ नहीं विचारधारा, बट खाती नहीं मैं। हमारी मम्मी भी नहीं खाती थी। मेथा नवरात्रि उपवास रहता, हर एक चीज का उपवास रहता था। मैं कोई उपवास नहीं रहती हूँ।
आपके लाइव में शिव पूजन भैया जुड़े हैं, बात कर लो। पूजन मेरा खास दोस्त, कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना। नहीं भैया, भाइयों से तो कभी गलती नहीं हो सकती, मुझे उम्मीद है। और यह बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। कभी नहीं चलेगा भैया, आप मेरे पे भरोसा नहीं रखते हो क्या? बोलो भैया। मैं सभी लोगों से बहुत हटकर हूँ, तभी लोग मुझे रुलाते हैं। तभी मेरी गिनती कहीं नहीं होती है। जो लोग बकवास करके चले जाते हैं ना, उनको सब मानते हैं। उसको बात करने का तरीका नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों भैया?
मेरे से बड़ा है। अच्छा भैया, आपसे बड़े हैं? आपसे बड़े हैं, वीडियो तो पड़ी है उनकी, बट उनकी कोई पिक्चर नहीं है। अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये है, हाँ देख लिया। इनकी फोटो तो है एक पहली जो लास्ट वाली वीडियो में, पर ये लग तो नहीं रहे हैं कि आपसे बड़े हैं। पुरान फोटो है? अच्छा, कितनी पुरानी फोटो? मुझे लग रहा है तब आपकी एज बहुत रही होगी, 16 साल। इतनी ना? अब मुझसे तगड़ा है। अच्छा। सो गए क्या? जान से ज्यादा प्यारा है एक दूसरे के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया, ऐसा होना ही चाहिए। समझो तो दिल से किसी को समझो, नहीं तो समझना ही नहीं चाहिए। गद्दारी के साथ नहीं किसी के साथ पेश आना चाहिए। दोस्ती का मतलब यही होता है, एक दूसरे के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए।
नींद आ रही है सोनू भैया। सच्ची। कल की तरह ना ऐसा नहीं लग रहा है ना, फिर सो जाएंगे, फोन वोन गिर जाएगा, टूट भी जाएगा। कल तो बच भी गया था। इंटरटेनमेंट्स ब्लॉग। हेलो। हेलो भैया, स्वागत है आपका। बोलिए कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं भैया, हम भी ठीक हैं। खाना पीना हो गया है आपका? वैसे तो हो गया होगा, 1 बज रहा है। लाइक डन, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? अभी मैं काम पर से आ रहा हूँ। अच्छा भैया, कहाँ काम करते हैं आप? अभी आप कहाँ पे हैं? दुबई। ओके भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तब तो अभी आप खाना भी नहीं खाए होंगे।
मैं तो रोज मस्त रहता हूँ। आपको दीदी पूछ रही हैं, मैं नहीं पूछा है। पहले कमेंट देखिए आपको किसने पूछा है। आपको आरोही दीदी पूछी हैं कि आज मस्त हो, बाल कटा लियो ना। खाना कंपनी में खा लिया था। ओके भैया, थैंक यू सो मच। खाना खा लेना चाहिए टाइम से। तब तो फैमिली गांव में होगी भैया। आप गांव में कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है भैया? यूपी जौनपुर जिला से। तब तो आप हमारे पड़ोसी हो भैया जी। तब तो आप हमारे पड़ोसी हो। थैंक यू भैया, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हो? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ भैया। सोनू भैया, आपके लाइफ में क्या चल रहा है? आपके घर पे कहाँ फैक्ट्री है क्या इसी चीज की? हम्म।
आपके घर की कोई फैक्ट्री है क्या इस चीज़ की बताओ? हम भी लेके आएँगे।
सोने जा रही हूँ, नींद सच में बहुत तेज आ रही है। आंखें की सूज गई हूँ, नहीं दिख रहा आपको? हम्म, सच्ची भैया अब सोने जा रही हूँ। आंख बहुत दर्द हो रही है। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं जा रही हूँ तो सब जा रहे हैं। फोन गिरा, फोन अपने आप गिर रहा है कल की तरह। और कहीं नीचे गिरा ना तो फिर बचेगा भी नहीं। दीदी दी आज कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है सिस्टर? ज्यादा हो गया है? क्या चीज? क्या चीज ज्यादा हो गया है, बताओ? कोल्ड ड्रिंक? फोन? हाँ, सोचे कोल्ड ड्रिंक ज्यादा हो गया इसलिए फोन गिर रहा है। फोन ज्यादा कहाँ है भाई? आप 10 फोन लेने की कोशिश कर रहे हो, हमारे पास तो एक ही है। सो जाओ, अच्छा लोगों को कोई नहीं सपोर्ट करते हैं। सही बात बोल रहे हो भैया, थैंक यू सो मच। पर हम अच्छे नहीं है भैया ना, तभी तो लोग सपोर्ट नहीं करते। अच्छे होते तो हमारा भी लोग सपोर्ट करते। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप भी सो जाइए, आपको भी तो ड्यूटी जाना होता है। हम लोग तो घर पे रहते, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। आपको हंसी आ रही है, हमको नींद आ रही है।
हम भी हँस-हँस के नीट को टाल रहे हैं। क्या? थैंक यू सो मच। अच्छा। अच्छा, भाभी की आईडी है क्या? बताना सोनू भैया। आरोही नाम से भाभी की आईडी है क्या? बताओगे? किसकी आईडी? नहीं, फिर किसकी है? फिर किसकी है? मेरे हिसाब से तो लग रहा था भाभी की है। हमको खुद। अच्छा। सॉरी। आप में थोड़ा-सा भी घमंड नहीं है, आपका संस्कार अच्छा है। थैंक यू सो मच भैया। घमंड किस बात का करेंगे बताओ? घमंड किस बात का करेंगे भैया? पहली बात, गरीब लोगों के घमंड नहीं होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं उनको हो जाते हैं। हमको खुद नहीं पता है। अच्छा, फिर ऐसे कमेंट क्यों हो रहे हैं सोनू भैया? मैं समझ नहीं पाई। मैं तो सोची भाभी हैं, तभी मैं कुछ नहीं बोली। अच्छा नहीं लगता ना इस तरीके का कमेंट। लाइव में कितने लोग जुड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। सच में सॉरी, रियली सॉरी। मैं सोची भाभी हैं। पहले तो मैं पलक सिस्टर को समझ रही थी। फिर जब कमेंट ऐसे आया तो मैं सोची कहीं भाभी की आईडी तो नहीं है। कहीं की भाभी भी कभी-कभी आपके लाइव में जुड़ती हैं इसलिए।
हमको जीजा बोलती हैं तो मैं क्या करूं? आप क्या कर सकते हो? आपकी गलती नहीं है। पर जो हमारी बहनें हैं ना वो समझती नहीं है। हमें शब्दों का चुनाव कैसा करना चाहिए। हमेशा जेंट्स ही नहीं गलत होते हैं, लेडीज भी गलत होती हैं भैया। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। इसीलिए तो मैं कंफ्यूज थी कि मतलब किसकी आईडी। मुझसे तो रोज मस्ती करती है। अच्छी बात है। पर कुछ लोग अच्छे भी जुड़ते हैं, कुछ लोग बुरे भी जुड़ते हैं। जो अच्छे होते हैं उनको बुरा लगता है, जैसे मैं। मुझे सच में पसंद नहीं है। पर क्या करूं, मैं तो आपकी वजह से आपके लाइफ में जुड़ी हूँ। आपको अच्छे से पता है मैं ऐसी चीजों के बीच में नहीं जाती। पर्सनल बात अलग होती है भैया। अब लाइफ में कोई ऐसी बोले अच्छा नहीं लगता। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कौन है। कहीं भाभी आपकी परीक्षा से ले ले तो। फिर तो आपकी पिट्टी पिट्टी हो जाएगी। हमको भी लगता है कहीं हुई तो नहीं। टेक केयर। अब मैं भी सोऊं, बोलो जल्दी बोलो सोनू भैया। एक दिन पूछ रही थी हमसे आरोही कौन है। अच्छा। भाभी पूछ रही थी। पूछेंगी। वो तो कोई भी रहेगा पूछेगा। हमको लगता है हमको चूना लगा रहे हैं लोग। चूना तो नहीं लगा रहे, माल खिला देंगे कभी।
सो जाओ अब। सोनू भैया, ड्यूटी जाना ना आपको सुबह। अब सो जाइए आप। सच में। ओके। बाय, गुड नाइट। सच्चे सोने जा रहे हैं। आप भी सो जाइए। नींद ही आ रही है। सच्ची बहुत आ रही है नींद। आंख देखो सूज गई है नींद से। हम्म। बाय बाय, गुड नाइट।